Hi everyone, welcome back in class 9th standard. Already last 2-3 days I have already discussed 3.1, 3.2 of chapter number 3 coordinate geometry by the PDF, and before that class I was taking one class in the coordinate geometry. Okay, but today we will discuss exercise 3.3 coordinate situated the quadrant on the Cartesian plane on the graph. And children, yesterday sent PDF some important questions. Okay, so solve this question, and after coordinate geometry class, doubt and problem session class attend on online class. Okay, let's come to the point. Exercise 3.3, there are two questions only, and question number 1, in which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. Okay, so it's a very easy question. These coordinates are plotting on the graph. First of all, question number 1, solution. The given points are as follows. -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5. First of all, draw the x-axis and y-axis on the graph paper. X, O, x dash, this is x-axis. Y, O, y dash, this is the vertical line called y-axis. There are 4 sections. This is the first quadrant, second quadrant, and third, fourth quadrant. First, second, third, fourth. According to sign notation, remember all of you, according to sign notation, putting the coordinates on the Cartesian plane, like -2, 4, and one thing more, these points plotting on the graph, beforely mention the proper segment and line numbering. So this is origin point always 0, 0. This is the positive direction of x-axis, negative direction of x-axis, positive direction of y-axis and negative direction of y-axis also.
So here maximum number I think 5, positive or negative both, and minimum number is 0. So mention on the axis from 0 to 5 number like 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4, -5. First coordinates are -2, 4. So on the abscissa x-axis -2, this is -2, and y-axis positively 4, 1, 2, 3, 4. This is the coordinates -2, 4 lies on second quadrant. Okay, and next 3, -1. Abscissa is positively 3, 1, 2, 3, and ordinate is -1. -1 means y direction negative. So these point lining joining them. So their point 3, -1, and again -1, 0, -1, x-axis negatively -1 and y-axis. तो this points lies on negatively x-axis, यानी -1, 0 जो पॉइंट्स है वो आपके x-axis के नेगेटिव पोर्शन पे ही सिचुएटेड है. तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ बनेंगे? -1, 0, and according to sign notation minus comma plus situated in the second quadrant, and 1, 2 positively 1 and y-axis also 2. So 1, 2 plus coordinate, and -3, x-axis -3 here and y-axis -5 there. So line joining them -3, -5 main. Okay, so in question number 1 only which quadrant and axis. So there are 5 coordinates, 1, 2 in first quadrant, -2, 4 situated in second quadrant, and -1, 0 also. But point number third, -1, 0, one exceptions because y is 0. So -1, 0 lies on x-axis in negative direction. Okay, mentioned in the answer, -1, 0 points and coordinates lies on x-axis in negative direction, and -3, -5 in the third quadrant, and -3, -1 in फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इस तरीके से इसमें आपके पास जो 5 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उस 5 कोऑर्डिनेट में 4 की प्रॉपर प्लॉटिंग है, बट -1, 0 में जो y एक्सिस के पॉइंट्स हैं वो 0 हैं, तो वो आपके एक्सिस पे ही आएंगे. तो इसी वजह से -1, 0 की जो कंडीशन होगी वो आपकी इसी पॉइंट पर आ जाएगी. ठीक, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, बट y आपका 0 सिचुएटेड ही होगा, तो वो किसी क्वाड्रेंट में सिचुएटेड नहीं होगा. -1, 0 कोऑर्डिनेट्स आपके किसी प्रॉपर 4 क्वाड्रेंट में नहीं होगा, लाइज ऑन एक्सिस. ओके, डन. एंड क्वेश्चन नंबर 2, plot the point x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. Second question also easy, just like plotting on the graph x, y axis. So the given tables are question number 2,
solution. The given table is x, y, -2, -1, 0, 1, 3, in the y 8, 7, -1.25, 3 and -1. Okay. Mention all the elements on the tabulation form. So -2, -1, 0, 1, 3 are abscissa situated on x-axis. 8, 7, -1.25, 3 and -1, this is ordinates. Okay, so generate the point. So point A and coordinate of -2, 8. Point number B -1, 7. Point number C 0, -1.25, and point number D 1, 3. Point number E 3, -1. A, B, C, D, E. Again X, O, X dash, this is the x-axis. Y, O, Y dash. Again maximum number is 8 in this question, so utilize your measurement on the graph. This is the origin point 0, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. 1, 2, 3 4 5 6 7 8. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Point number A, the coordinate -2, 8. X-axis -2, 1, 2, -2, and y 8. 8 is here. So this point, line joining them. So points are situated. This is A coordinates. Okay, and D -1, 7. X-axis -1, y-axis this. So this is B point, and C x-axis 0, but y-axis -1.25. This is 1, this is 2, -1.25. This is here. Okay, so C point is positively plus minus. C point is here, like on the x-axis line, and D 1, 3, x-axis 1 and y-axis 3, A, B, C, D, and E 3, -1, 1, 2, 3, and y -1, A, B, C, D, E. Okay, so these are just like plotting on the Cartesian plane, choosing suitable units and distance on the axis. Okay, so very simple. This is the A, B, C, D, E. These are coordinates, and plotting on the Cartesian plane of graph. And what is the meaning of distance between axes? What is the
distance between axes means suppose this is a point and here -3,5 मेन पॉइंट। ओके, तो -3,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सिचुएटेड है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन रोटेशन होना चाहिए क्या होना चाहिए, माइनस कॉमा प्लस होना चाहिए, क्योंकि आपका एक्स एक्सेस नेगेटिव है, वाई एक्सेस पॉजिटिव है। तो माइनस कॉमा प्लस -3,5 पे होना चाहिए। अब डिस्टेंस की मीनिंग क्या बनती है कि ऑन द एक्स एक्सेस पे -3 क्या है कि ऑन द एक्स एक्सेस पे 3 यूनिट के डिस्टेंस पे ये पॉइंट सिचुएटेड है, एंड वाई एक्सेस के 5 यूनिट डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 यूनिट के डिस्टेंस पे ये वैल्यू सिचुएटेड है। तो ये डिस्टेंस की मीनिंग होती है। डिस्टेंस की मीनिंग का मतलब ये है कि किसी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट एक प्रॉपर यू से रिप्रेजेंट की जाती है, अदरवाइज सेंटीमीटर मीटर से भी रिप्रेजेंट की जाएगी, बट इन दिस चैप्टर एंड इन दिस क्लास यूज ओनली यूनिट। -3,5 तो डिस्टेंस बिटवीन ऑन एक्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट ऑल्सो। कैसे, आपने एक में यहाँ ले लिया, कोई सी कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपने ले लिया, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट उस पर फोकस मत करिए बिकॉज मुझे टॉपिक आपका क्लास 10th स्टैंडर्ड का है। ओके, सो इन दिस क्लास 3.3 there are two question totally solved, okay, and 3.2 also 2 question, and in the 3.1 I think only 2 question, okay. So 3.1 3.2 3.3 are totally completed and already given to you 5 questions all of you, ठीक। 5 क्वेश्चन हमने आपको एक सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टैग के बिहाफ पे दिया है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस स्टार्ट विल बी न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।